Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, rightly said by Nelson Mandela. Education is the cornerstone of personal growth, societal progress, and individual empowerment. It opens doors to new possibilities, broadens horizons, and equips us with the knowledge and skills necessary to navigate the complexities of the world. We are back with yet another informative and entertaining podcast. Namaskar, Devi or Sajjano. This is your host Aditya Pratap Singh signing in for today's amazing podcast session brought to you by Team Inactive's Shamla College Evening, a team of brilliant minds dedicated to bringing about a change in the society. Through our podcast, we intend to bring forth the stories of inspirational and fabulous people. Last week, we interacted with Miss Nikita Bandre, MX Queen India 2022, the winner of Color Positive Fashion Pageant. As for today's podcast, we are extremely delighted to have another fabulous personality known for his dedication towards the social cause. He has been working night and day with his team to bring education and awareness to the underprivileged section of our society. I extend a cordial welcome to our guest, Mr. Akash Tandan, the founder of Pehchaan, the street school, a non-governmental organization. Over Thank to you, you. Aditya. Thank you so much for having me here. Yeah. So I hope you're doing well, sir, and I hope everything is running smoothly. Yes, all good. So, to start with the session, I will put my first question, and it's how did you start? Like it will sound like a very cliche question. I bet you have heard it several times. So, how did you start this organization, sir, and what motivated you to do so? So actually, it didn't start as an organization initially. It was just you can call a passion or interest of a few people who were just wanting to help social people, so people socially. So after doing multiple social works in different domains, we came across a slum in Delhi, which is just 50 meters adjacent to WHO World Health Organization. That was the reason actually we went inside that slum, that we just wanted to know like why and how can a slum exist just 50 meters adjacent to World Health Organization. So now the organization which is actually making all these strategies related to health across the universe, how is it possible that there's no dispensary or a medical facility available in the slum? There's no educational place available there. There's no proper water supply. There's no electricity. How is it this place is even existing here? So that's when we came across this place. We actually went inside the slum to explore, and that's when we realized uh, how bad of a structure this is, and how small of a people or a person as an individual we are, that we cannot do anything. Right? We cannot help them financially. We cannot help them in any form that stays. So we were actually depressed. We went inside in excitement that we'll find something new, but actually we were depressed that there was nothing we could do. So while returning, we just came across a few children who were playing just across a civil line. They were actually playing there. So we thought like, why not just spend some time with them? So from there, the whole thing came in, wherein we started spending time with children, and eventually we realized that whatever we do as an individual or as a group, it's less, right? You give them food, it will it will eventually be zero. You give them money, it will eventually be zero. You give them anything, it will eventually be zero. Education is something that will only grow, that will only make them better till they're alive, right? It will, even if you teach them a very basic thing, it will always stay with them. It will always stay with them. It will always make them better wherever they are, right? So when we talk that making society better, this is how you do it. So from there we started interacting with these children, and we started teaching a group of 5 10 students. From there the whole initiative started, and we started posting pictures on social media with people that, okay, hey, this is something that we are doing, and we need your help, come, let's just do something.
So it started off from there as a group activity, as a social work, and eventually when people around there they got to know that okay there's a group that comes every weekend and वो लोग पढ़ाने के बाद बच्चों को टॉफी चॉकलेट देते हैं फ्री में उनको स्टेशनरी मिलती है so that whole message spread out loud and within I guess 6 months we had more than 100 people uh, uh, 100 students who started coming in to study and that's when the local people they actually gave us a dedicated space there uh, to start this initiative formally wherein we had a place जहाँ पे हर सैटरडे संडे क्लास लगती है और बच्चे पूरे वहाँ स्लम के आते हैं it's been 8 years now. Post lockdown, we were somewhere around 200 children at this center, and across all centers, we had somewhere around 6 centers and more than 700, 800 students. उसके बाद लॉकडाउन हो गया थिंग्स वेंट डाउन एवरीथिंग वाज जीरो फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years all our centers were actually shut whatever things we had जो भी सामान था सब either चोरी हो गया था खराब हो गया था so it was like जो हमारी 5-6 साल की मेहनत थी it was all zero. So post lockdown, we eventually again we started building this up. We initiated more. We invited more people to join. We initiated some new centers. We actually set up the old centers, and right now, after almost you can say 2 years, we are back on ground with more than 10 centers active, and more than currently you can say more than 1,000 people students are actively involved at across all these centers, and we are expecting that as soon as the summer vacations are over and once the temperature gets well, a lot of people will come back from their respective villages to the slums, and we are expecting to grow this number most probably somewhere that would touch 1,500 very soon. Wow, that's great, sir. That sounds amazing. And so it initially started अगर शुरू से देखा जाए तो it was an irony that dragged your attention, right? जो एक तरफ WHO का you know वो था सेटअप था एंड एक तरफ जो स्लम में बच्चे थे. So Right. या एंड आज आप उन्हीं बच्चों को एजुकेट करते हैं एंड यू आई थिंक अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी किया है एंड आगे भी आई आई एम वेरी श्योर कि आगे काफ़ी कुछ प्रोग्रेस होगा. सो सो अभी लाइक एक चीज जो I'll say कि सबके दिमाग में आता है when they hear like organization's name, right? So Pehchaan, what is the story behind this name? Like how did you come up with this name? Okay, so again, it's a very typical answer that I'll give you. कि पहचान है तो it comes across like giving identity to someone. So actually, when we went to these children, ironically, even if they are in the center of your nation, right? Delhi में है, which is the center, and वहाँ पे भी जो सबसे centralized location है, central Delhi, वहाँ पे ये slum exist करता है. वहाँ के बच्चे व्हेन वी सॉ देम दे वर जस्ट नाले के साथ वो अपना खेल रहे हैं कुछ तंबाकू करते हैं कुछ वहाँ पे अपना ड्रग्स लेते हैं इट्स ऑल ओपन तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है फ्यूचर एज एन आई एम नॉट सेइंग लिटरली उनका एज फ्यूचर नहीं है बट उनके लिए उनका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी उस जगह के बाहर कुछ देखा ही नहीं है ना उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं ना उनके नेबर्स कोई पढ़ा लिखा है ना उनका कोई दोस्त पढ़ा लिखा है ना कोई रिश्तेदार पढ़ा लिखा है उनके लिए उस एक छोटे से एरिया के अलावा बाहर कोई दुनिया ही नहीं है राइट Hmm. तो सिंस उनके लिए कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया के लिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करते राइट फॉर एग्जाम्पल आप कभी सड़क पे जाते हो आपको रेड लाइट पे बहुत बच्चे भीख मांगते मिल जाएंगे आप कभी शीशा खोल के उनका नाम नहीं पूछते हो राइट आप कभी नहीं पूछते आपको बड़े होके क्या करना है you just ignore them so even if they are there they don't have an identity they're just you call them वो भिखारी है वो भीख मांग रहे हैं या वो ऐसे हैं that's it सो विद एजुकेशन वी आर एक्चुअली ट्राइंग कि उनकी एक आइडेंटिटी बने ठीक है जब वो बच्चे पढ़ेंगे या मे बी हम उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे बट इतना अगर उनको बेसिक कुछ पढ़ा दें या एक उनको कॉन्फिडेंस देते कि हाँ वट एवर वी आर टूडे इवन दे कैन बी एट दैट पोजिशन or maybe just we give them a visibility ki outside your particular environment or outside your particular area there's a world out there right so when you give them that visibility maybe out of 1,000 there could be just 10 people
right? Who would come out as some great personalities. I'm not sure if you have watched Sir movie on Netflix. If you get a chance, do watch it. How, as a ripple effect, it helps how a person uh, just spends his life building future for 40 students, and then how those 40 students keep on trying to build future for those. So when a wise man said each one teach one can actually change the world, he actually meant it, right? We never took that seriously when we were young, but now when we see how we have grown as a person, right? हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हम कुछ बने, so we are a level above our parents. Similarly, if we teach up children in a form wherein they are one level above, so that's how the whole structure works. And right, so अगर आप किसी एक बच्चे को पढ़ाते हो, तो आप टेक्निकली उनकी पूरी फैमिली को हेल्प कर रहे हो, अब टेक्निकली यू आर हेल्पिंग देयर प्रीवियस जनरेशन एंड देयर कमिंग जनरेशन, सो वहाँ पे दो जनरेशन की हेल्प हो जाती है। आज के Right. टाइम पे जो सड़क पे बच्चे सॉरी जो भीख मांगते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को उनसे पैसे कमाने हैं। Mhm. यही बच्चा अगर वो जॉब करने लग जाएगा, तो अपने माँ बाप की तो हेल्प करेगा, बट उसके बच्चे ही मेक श्योर कि उसके बच्चे कभी भीख ना मांगे। Right. So that's how impactful education is. That's how lasting the impact of education is. And that's where the name came in, कि इनको थोड़ी सी भी हेल्प करोगे तो देयर कुड बी अ कंडीशन जहाँ पे इनको अपनी एक पहचान मिल सके। That's very, very rightly said, sir. And, very beautifully put. And आपने जो कहा, like the part where you said कि if we give them money, well initially they'll run out of it. मैंने भी कहीं पढ़ा था कि money for them is like water, like बंजारे के हाथ में पानी, जो कि हाथ से रिस करके नीचे मिट्टी में विलीन हो जाता है. Hmm. And that's very right because they don't obviously if you give them money they have no idea, they have no knowledge कि उसको कहाँ पे use करना है. So if you're educating them, you're also making them aware of certain things, other things other than only the bookish knowledge. Education as a whole is a very different thing. So Right. that's very great work that you're doing. And next question is, uh, currently, how many active centers does your organization have? So currently we have 10 active centers across Delhi and Noida. Okay, and I guess they're all around the metro lines. I am guessing. Yes, yes, yes. Majority of them are near or just adjacent to metro. All right. Okay. Any specific strategy that you follow while putting up a center somewhere? No, there's no strategy at all, um, and we actually never had a strategy. Even when we started this, we never had a strategy कि हमें आगे क्या करना है. हमें था कि ठीक है time spend करना है, and things went on happening. It was never planned. It was never objectified. We still don't have an objective. If you ask me आपको आगे क्या करना है, I still don't have an answer. राइट, हमारे 10 सेंटर्स हैं, वी डोंट फील प्राउड। हमारे आगे कितने सेंटर होंगे, वी डोंट हैव एनी प्लान। आर ओनली प्लान इज कि वो हम चाहे 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं चाहे 1000, वी मेंटेन अ स्टैंडर्ड, वी डोंट मिक्स आर आइडियोलॉजीज विद द नंबर्स, राइट? I'll not show you fancy numbers कि हमारे इतने सेंटर्स हो गए. A lot of organizations they do, they show you हमारे इतने हजार सेंटर्स हैं, इतने हजार बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते होंगे। हमारे हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड वर्क है कि इवन इफ देयर इज जस्ट अ स्मॉलर नंबर, बट दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड द नंबर्स और ऑब्जेक्टिव्स. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एजुकेशन कि चाहे कम को मिले पर अच्छा मिले. And the very basic thing that we try is, because most of our volunteers they are students, we want to have a center at a location which is easily accessible to volunteers, because eventually they are also students, and we care equally for our volunteers, for our interns, as we do for children. So we want to keep it easy. इसीलिए कई लोकेशंस ऐसी अभी भी हमारे पास आती हैं, आप सेंटर खोल लो बट हमें पता है वहाँ पे हमारा वॉलंटियर नहीं जा पाएगा. एंड वी डोंट वांट टू स्टार्ट अप अ सेंटर एट अ लोकेशन जहाँ पे हम उसको सस्टेन ना कर पाए. वी डोंट हैव अ हैबिट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ सेंटर, या 2 महीने चला लिए, 10 महीने चला लिए, 4 महीने चला लिए, महीने में एक बार चला लिया. वो नहीं करना जस्ट टू शो कि हमारा सेंटर है. वी डोंट वांट टू रन अ सेंटर.
So the basic criteria is accessible location and a location wherein we can have something that is close to permanent and close to regular. Okay, commendable work, sir. And it's great that you don't follow any specific strategy and that you only think of the the accessibility and the convenience of both the volunteers and students. On to the next question. How many members are working under you and how do you operate on ground? Currently, if we talk about the total number of volunteers, we have close to around 450, 500 people. Uh, uh, Almost 50% are working on ground and 50% are actually working online to create resources for the people who are working on ground. Wow, that's amazing. Okay, so how does your organization actually differ from other organizations? I mean, there are other organizations too, but how does Pehchan make its own identity, its own Pehchan? The very basic thing, as I said, is our objective. Our objective is very clear. We are here to not to create numbers, but to help children on ground. And I guess that is the very basic USP of our organization. Uh, that we don't run behind numbers. Our centers are regular. Our centers are consistent. If you're focused at a location, we are focused at a location. We don't keep on changing a location. It's not a one-time activity. कि महीने में एक activity के लिए so a lot of organizations they do महीने में एक बार 200 लोगों को बुलाया एक लोकेशन पे गए वहाँ बच्चे पढ़ाए एंड दे आर सेइंग कि हमारे ऐसे इतने सारे लोकेशंस पे इतने सारे एक्टिव वॉलंटियर्स हैं नो व्हेन वी से वी हैव 10 सेंटर्स वी हैव 10 सेंटर्स व्हेन वी से वी हैव 1000 स्टूडेंट्स वी हैव 1000 स्टूडेंट्स आपको जब आना है आप आओ वीकेंड पे एंड यू कैन मीट देम राइट it's all volunteer driven. None of our volunteers, interns, TLs, or core team members, none of them are paid. It's completely crowdfunded. It's all volunteer driven. I'm not sure how we have been able to run this for 8 years now, and we are still growing. Touchwood, uh, but yes, that is somewhere wherein a lot of organizations give up because they start with an objective, but eventually it turns out कि नहीं हमें तो funds चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए तो वहाँ पे डायरेक्शन चला जाता है हमारा नहीं है हमें जब पैसे चाहिए होते हैं वी रन क्राउड फंडिंग की अभी स्टेशनरी चाहिए अभी ये रिक्वायरमेंट है एंड वी अरेंज दैट सो दैट दीज आर द टू थिंग्स वेरी बेसिक थिंग्स that have differentiated. First is consistency, and second is since it's a volunteer driven organization, we only get people who are actually wanting to serve to the society. We don't have people who are coming here for some stipend or some salary or some other kind of किसी लालच में नहीं आते हैं वो जस्ट दे जस्ट वांट टू डू सोशल वर्क एंड वही लोग सस्टेन करते हैं सो आई गेस 10 पीपल हु कम ऑन ग्राउंड एक्चुअली ओनली 4 or 5 स्टेज बट जो स्टे करते हैं वी नो कि ये अगर स्टे कर गया 3 महीने तो ही इज देयर टू डू सोशल वर्क बिकॉज उसको उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है so if Uh, you actually want to do some social work, uh, this is, I guess, this is the platform. Uh, so yeah, that's the differentiating factor between a lot of organization and us. That's amazing, sir. And it's very amazing that like to know that there exist so many people who are willing to do things for social cause. And it's great how you started it and how you have created a chain of people. Like एक सूत्र में लोगों को बांधना is not an easy task, and it's great that you have been able to handle all this. It's amazing. Nothing less than that. Thank you. So, if someone wishes to join, like say there is an individual who wishes to join your organization, how does he do so? So ours is more like an open platform. We don't call it as an NGO usually. It is a very cliche, but we call it a platform wherein anyone who wants to help and anyone who needs help, we just behave like a platform. We'll give you a space wherein you can share your expertise. So for that sake, I can tell you the youngest volunteer that we have is a class 8 student, and the eldest volunteer we have is a retired lady who is almost 56-year-old, right? So everyone who wants to teach, everyone who wants to share a skill, be it sketching, be it dance, be it arts, be it maths, be it science, anything that you want to teach or you think you can teach, you can come, because there's a person
outside who is looking for that skill, right? So that's for ground. And since we were getting a lot of requests from people who are outside Delhi who cannot come physically on ground, so we have multiple options online. We have multiple roles wherein people can contribute. And I'll share a small example with you. So that we had this intern who was following up with me to work on ground. She was outside of Delhi. So apparently she couldn't join on grounds, but she was following up for almost 2 months that I want to join on ground, I want to join on ground, and I feel bad that I couldn't come on ground. Eventually I asked her कि ठीक है आपको इतना काम कर रहा है आप छोड़ो ऑफलाइन नहीं आ सकते इट्स ओके जॉइन एंड वर्क एज एन एचआर शी वाज लाइक ठीक है कर लूंगी अब कुछ नहीं मिल रहा कुछ तो करना है for a month she worked there, and we were having this common meeting wherein she suddenly says ki it's I feel blessed that I didn't come on ground as a teacher, and I feel proud that I'm working as an HR. And I was like, okay. मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई why would she say in front of so many people कि I feel blessed that I don't work on ground, I work as an HR, I have chosen this domain. I asked her कि why. So she said sir बहुत सिंपल सी मैथ्स है, अगर मैं ग्राउंड पे जा रही होती राइट, मैं 5 बच्चे 10 बच्चे मैक्सिमम 15 बच्चे पढ़ाती, उससे ज़्यादा तो मैं हैंडल भी नहीं कर पाती, और मैं हर हफ्ते वो 15 बच्चे पढ़ाती हूँ। अब मैं हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 नए वॉलंटियर्स भेजती हूँ, और हर वॉलंटियर अगेन मिनिमम 5 बच्चे भी पढ़ाएगा, तो महीने में मैंने अगर 20 वॉलंटियर भेजे तो मैंने घर बैठे बैठे 80 बच्चे पढ़ाती हूँ। Wow. So that's the impact of an individual, right? And that is the base of this organization. How we started off with 10 children, right now we have 1,000. We started off with 4 volunteers, right now we have active 500 volunteers. अभी कितने लोगों की रिक्वेस्ट है जो ज्वाइन नहीं कर पाते या जो बीच में से छोड़ जाते हैं, उनका काउंट नहीं है, जितनों ने लाइफ टाइम अभी तक काम किया उनका काउंट नहीं है. सो एज एन इंडिविजुअल वी ऑलवेज थिंक यार मैं एक क्या कर लूँगा, राइट? हमारे सेंटर की जो अभी टोटल 1,000 बच्चे अगर हम बात करें, सो इवन इफ अ चाइल्ड नीड्स ए 2 notebooks a month, that would be 2,000 notebooks every month, right? If you say कि 20 रुपए की एक नोटबुक आती है महीने की, 20 into 2,000 is 40,000 rupees just for notebooks, right? It doesn't include pencil, rubber, scale, sharpener, color, whiteboard, white marker, black marker, mats, fans, electricity, water bottle, blah blah blah, right? Just notebooks is 40,000. Now imagine an organization like us which has zero funds, how would they arrange it, right? So for us it is 2,000 notebooks. But just imagine as an individual, if I ask you यार आदित्य यार 5 notebooks दे सकता है, उनसे 5 notebook 100 रुपए की होती है, ठीक है ले लो. And now imagine there are 100 people donating five notebooks. For them it's just 100. So as an individual will think यार 100 रुपये दे के क्या होगा, ये क्या क्या ही बेनिफिट हो जाएगा. एंड फॉर दैट सेक इफ यू से एक पेंसिल का बॉक्स 30 रुपए का आता है, राइट? 100 रुपये में यू कैन डोनेट 3 pencil boxes, which is 30 pencils. Just imagine if there are 100 people donating three boxes each, there would be 300 boxes, 3,000 pencils. So for you it's just 90 rupees. कितना होता है एक कॉफ़ी भी शायद से CCD की 200 रुपए की आती है, 200 250 रुपए की, राइट? इट इज़ लेस देन दैट. So Right. when you do it in a group, it grows. So that is how we believe everyone can contribute in some way or the other, and that's how we have been growing because we have got some amazing people जो शायद थोड़ा थोड़ा करते हैं. Uh, but yes, we have built this. वो literally कहते हैं ना छोटा 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 पत्थर रख के it grows and becomes a castle. So that's how we have built this up, and that's why I say we don't have an objective. People will come, people will work as an individual, और आप कितना भी कर रहे हो even if it's very small for you, but trust me वो किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद किसी के पास उतना भी नहीं है. Right. That's amazing, sir. I mean, uh, the way you explained everything. I mean, आप कहाँ से it's amazing. Like आप छोटी सी चीज को how you pile things up and how you correct everything and all the donations and stuff for the kids. So it's amazing, seriously. So how do you actually like? Are there any donors that are like specific donors जो आपको
जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन? No, so there are no fixed organizations that are helping us. It is only volunteers, ex-volunteers जिनको हम बोलते हैं. So on a monthly basis we have a list कि हमें ये requirement है. हम उसको ग्रुप्स में शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं. देयर आर जनरस गुड पीपल, इवन वॉलंटियर्स हु कंट्रीब्यूट कि ठीक है हम ये ले आएंगे, हम कभी फैंस ले आएंगे, हम कुछ कर देंगे. सो दैट्स हाउ वी वर्क, बिकॉज व्हेन यू गो आउट विद ऑर्गेनाइजेशंस अ लॉट ऑफ कंडीशंस कम इन, एंड हमारी यूजुअली कॉर्पोरेट्स के साथ बनती नहीं है बिकॉज उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं दैट हम फुलफिल नहीं कर पाते. सो राइट. Okay, so जो आप like the kids that come to your centers to study, तो आप लोग उनके लिए जो करिकुलम है, how do you design it and आप लोग उसको कैसे implement करते हैं? राइट. सो अभी जो हमारा करिकुलम है, इट टुक अस ऑलमोस्ट एन ईयर टू बिल्ड दिस दैट करिकुलम. प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे हर बच्चे का लेवल अलग है, राइट. कोई बच्चा अगर सेम एज का है तब भी उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इज डिफरेंट. किसी को हिंदी बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती. किसी को इंग्लिश समझ आती है बट बोलनी लिखनी नहीं आती. बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है. तो आफ्टर बीइंग, सो पहले तो हम बिना किसी करिकुलम के पढ़ाते रहे उनको, बट इवेंचुअली वी रियलाइज कि दिस इज नॉट वर्किंग. Maybe we are just diluting our efforts, and that's what a lot of other organizations are doing. They spend time with children, they are doing all the good work, but they don't know कि उसका impact कितना आ रहा है. राइट. जस्ट बिकॉज मैंने किसी को खाना खिला दिया एक टाइम का और मैं सोचूं मैं सोशल वर्क हो गया, मैंने तो किसी का पेट भर दिया, राइट. बट वो 6 घंटे के बाद उसका क्या होगा? जैसे उसका खाना वो पच गया, वो निकल गया, वो फिर से भूखा है, और वो उतना ही भूखा है जितना वो पहले भूखा था, राइट. तो अगर हम भी ऐसे जा रहे हैं, हम उनको 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि यार मैंने तो पढ़ा दिया, बट आपके जाते ही अगर वो बच्चा फिर से वो जीरो है, उसको नहीं समझ आया, उसको नहीं पता, या उसको याद नहीं रहा, तो आपके 3 घंटे वेस्ट है. So after a lot of research, we actually developed a small curriculum that is not even a curriculum. These are like topics जो हमें cover कराने हैं हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में. उसके बेसिस पे भी started teaching. अभी हम एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे we can actually track कि कौन सा बच्चा किस क्लास में है, वो कितना पढ़ चुका है, कितना पढ़ना है, क्या उसका लेवल है, कौन वॉलंटियर उसको कब क्या पढ़ा रहा है, वो कितने दिन सेंटर में आता है, कितने घंटे पढ़ा है, किस किस वॉलंटियर से पढ़ा है. सो वी आर trying to capture everything and monitor everything so that we have, so just like any formal school does, उनके पास उनकी अटेंडेंस होती है, बच्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है. यू कैन से वी आर लाइक एन इनफॉर्मल स्कूल, जो स्कूल जैसा ही है बट वो उनके घर के बहुत पास है और वो थोड़ा सा अलग है. Okay, so that explains the name, right? Pehchaan, the street school. So that makes complete sense now. All Yes. right. So, what do you think कि कौन सा एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ऑब्वियसली जो हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं एंड इट्स अप टू अस कि हम लोग उनको कैसे मोल्ड करते हैं, हाउ डू वी शेप देम. So, how do you think we shape them? We reach out to them and help them grow in such a way that they are able to grow as an individual and contribute to the nation. सो आई एक्चुअली डोंट एग्री टू द स्टेटमेंट कि बच्चे वो मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसे बना दो बन जाते हैं. बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है उनको क्या करना, उनको मतलब बस पता नहीं है उनको क्या करना है, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में है. हम उनको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, हम उनको सिर्फ ऑप्शन दे सकते हैं. और इसका आई गिव यू वेरी परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस. वी हैव दिस चाइल्ड जो हमारे साथ पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से पढ़ रहा है. वो स्टार्टिंग से आता है अच्छा खासा, वो 9th में अभी फेल हो गया है. वो 7-8 साल हमारे पास आ रहा है, वो पढ़ता नहीं है, ठीक है. उसको हम बहुत ट्राई करते हैं, वो आएगा, खेलेगा, कुछ 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 करके वो चले जाता है. वो पिछले 7-8 साल से पढ़ा नहीं है हमसे. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारे पास एक वॉलंटियर आए थे, वो इज़ अ स्केच आर्टिस्ट, साजन नाम है उनका. सो वो आए कि मुझे स्केच सिखाना है बच्चों को. हमने कहा ठीक है आप सिखाओ. सो बाय एनी चांस इसको पता चला वो स्केच सिखाते हैं, वो आया और इससे वो स्केच सीखने लग गया. उसको भी नहीं पता था कि उसको
वो आर्ट में था, वो ड्राइंग बनाता था, बट उसको नहीं पता था कि उसको क्या बनना है। बट जब उसको दिखा, ही स्टार्टेड स्केचिंग, एंड वो 3 महीने में वो इतना अच्छा स्केच आर्टिस्ट बन गया है मुझसे कि वो आपकी शक्ल बैठे बैठे आधे घंटे में बना सकता है। उसने 3 महीने वो किया, एंड नाउ ही इज रनिंग हिज ओन इंस्टाग्राम पेज। अब वो हमारे पास आता है कि मुझे पढ़ाओ, एंड हम्म। हम पूछते हैं कि अब क्यों पढ़ना है, इतने टाइम से तो नहीं पढ़ा। कहता नहीं, मेरे को ना इंस्टाग्राम पे कैप्शंस डालने होते हैं ना, वो इंग्लिश में डलते हैं, तो थोड़ी इंग्लिश तो आए मुझे, तो मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ना है। 9th में फेल हुआ है वो, ठीक है। वो 9th दोबारा दे रहा है रेगुलर से, एंड ही सेड कि अब मैं, क्योंकि मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, मुझे वेस्ट नहीं करना, तो मैं 10th ओपन से दूंगा। वो बच्चा जो पिछले 6-7 साल से पढ़ता नहीं है, वो 2 क्लासेस एक साथ कर रहा है। और ये मोटिवेशन हमने नहीं दी, हमने देनी होती तो हम 6 साल में दे देते। वो हम्म। उसके, जो उसके अंदर था, एक एक पैशन था, वी जस्ट बाई चांस वी गॉट हिम रियलाइज हिज पैशन, एंड आज वो कर रहा है। अब उसका अपना इंस्टाग्राम पेज चलता है, वो पढ़ता भी है, वो आर्ट्स भी करता है, एंड ही इज लाइक कि और 6-7 महीने 1 साल में आई विल प्रोफेशनली टर्न इनटू अ स्केच आर्टिस्ट, एंड मैं अपना प्रोफेशनली इसको रन करूँगा। और बिकॉज उसको वो अपना रन करना है, उसको पढ़ने का मन है, क्योंकि अब उसको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसको इंस्टाग्राम पे अपना पेज हैंडल करना है, उसको एज एन आर्टिस्ट आगे बढ़ना है, उसकी नीड है पढ़ना। And that's how people or children, they realize with time. So when you spend time with them, when you tell them कि okay, ये भी आप कर सकते हो, तो खुद आपको बता देंगे। अभी आप जाओ, आप किसी बच्चे, आप भी सेंटर में आते हो, यू गो, यू आस्क एनी रैंडम चाइल्ड उठा के कि उसको क्या बनना है, भाई हमें फौजी बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे ये बनना है। उनको पता है उनको क्या बनना है, उनको ये नहीं पता कैसे बनना है, क्योंकि उनके आसपास का कोई है नहीं, ना हाँ। उनको कोई बता सकता है, ना उनको कोई पढ़ा सकता है, ना उनको कोई गाइड कर सकता है, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। सो उनसे गिव देम अ मोटिवेशन कि भाई तुम भी कर सकते हो, वो फिर कर लेंगे, फिर आपको उनको बनाने की जरूरत नहीं है। उनको So बस एक दिया दिखाओ, रास्ता अपने आप बना लेंगे। that's wow. Like I really don't know what to say. मैं already बोल चुका हूँ and आपने although आपने वो statement contradict करी but जो आपने बोला I I totally have to agree with it because and also जो story आपने share करी it was really beautiful and it shows कि कैसे like क्या scope है you know as जो students हैं जो आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए uh, they can discover more than what they can do in their studies. जो स्टडीज वाला एस्पेक्ट है उससे हटके जो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी लाइक यू सेड कि आपके सेंटर्स पे यू यू हैव डांस क्लासेस एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज वाली क्लासेस भी तो that's beautiful sir that's amazing and I am very sure कि ये जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं उनमें से कई एक जैसे एक आर्टिस्ट आपने अभी बता दिया आगे भी कई एक आर्टिस्ट निकलेंगे बहुत सारे हमारे पास रैपर्स हैं, हमारे पास डांसर्स हैं, हमारे पास सिंगर्स हैं बहुत सारे, तो अलग अलग टैलेंट उनमें भरा पड़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो यहाँ पे इस कंडीशन में होके भी वो सपने देख रहे हैं, राइट। हमारे अगेन ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, बट हमारे जैसे अच्छे खासे बैकग्राउंड से कई लोग होते हैं जो कॉलेजेस में होते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या करना है। छोटी सी कुछ गड़बड़ हुई, वो दिल भी लाइक यार जिंदगी खत्म हो गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, एग्जाम में बैक लग गई, घर वालों ने ऐसा बोल दिया, अब दोस्त नहीं है। हमारी लाइफ नेगेटिविटी से भरी पड़ी है, हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, आज ये नेगेटिव हो गया, आज ये नेगेटिव। आप आधा घंटा इन बच्चों के साथ बैठो और उनसे बस ये पूछ लो, यार तुम्हें बड़े होके क्या बनना है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको बताएंगे ना कि यार मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, आप उनको देखो और आप खुद को देखो कि उनके पास ना होते हुए भी वो, उनके पास कितनी होप्स है लाइफ से, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। सो आई गेस इट्स नॉट ओनली अ लेसन फॉर देम, इट इज एक्चुअली लेसन एज एन ह्यूमन फॉर अस, कि हमारे पास, हम बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। फॉर मी, आज के टाइम पे हम कई बार ऐसा होता है कि पेंसिल या पेन अगर यूज कर रहे हैं, वो आधा भी नहीं होता, हम फेंक देते हैं। नोटबुक्स हमारे पास आधी भी नहीं भरती, डायरीज बहुत बार होता है, डायरीज हम लेके आते हैं मार्केट से, अच्छी फैंसी है, 250-300 की डायरी ले आए, वो 4 पेज 6 पेज भरेंगे, उसके बाद हम बोर हो जाएंगे, उसको फेंक देंगे। तो वो खाली आधा पेन, वो आधी पेंसिल, वो आधी नोटबुक हमारे लिए वेस्ट है।
बट ट्रस्ट मी वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे, उनको अगर आप आधी पेंसिल भी दे दोगे तो उनके लिए वो एक सपने जैसा होता है कि मेरे को एक नई पेंसिल मिल गई, क्योंकि वो इतनी सी पेंसिल को वो घिस घिस के कभी मुंह से छील छील के वो काम कर रहे होते हैं। हम्म। सो कई बार हमारे लिए जो चीज़ें बहुत कैजुअल हैं, वो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो समटाइम्स what is a waste for us is sometimes a dream for someone, right? And that's a lesson that as an individual you learn when you visit them on ground. And I guess is यहाँ पे the concept of sustainability and sustainable development भी आ जाता है, जहाँ पे you don't realize कि आपके पास जो resources हैं, you're not able to utilize it fully, and you don't even realize कि it can be, be use of use to someone else. तो आई थिंक एज हम लोगों को वी शुड ट्राई ऑन आवर लेवल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या हमारी सोसाइटी हो गई, वी वी शुड ट्राई टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, कि जो चीज़ें हम लोगों के पास हैं उसका ऑप्टिमल यूज़ कैसे करें. एंड एट इनएक्टिस वी like we follow everything as such, जो sustainability से related जो भी है, we follow them, and we come up with different projects, जैसे कि project के साथ. No, I agree. So NSS and actors, there are a lot of societies, college societies who are working in this domain, and it is really amazing to see, more and more people coming out of their comfort and work on ground, work online, and work in various ways to help people. But yes, at the same time, it is very important for all of us to be sure कि हम जो time spend कर रहे हैं, जो resources time कर रहे हैं, वो impactful हो, right? And the least you could do is every college has like thousands of students. Just imagine आप मंथ में एक ड्राइव करते हो जिसमें आप सिर्फ लोगों को बोलो कि आपके जो बची हुई स्टेशनरी है वो ला के एक बॉक्स में डाल दो, वो Mhm. चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कॉपी हो, A4 शीट्स हो, आप रख के दे दो। ट्रस्ट में आपका एक ऑटो भर के सामान निकल आएगा, और उससे कितने लोगों का इम्पैक्ट एक क्रिएट हो जाएगा। एंड फॉर देम इट्स अ वेस्ट। Mhm. उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, एक पेन दे दिया तो क्या हो गया, वो ऐसे ही हम खो देते हैं। हमारे हमारे में से कितने लोगों ने एक्चुअल में आज तक एक पेन ऐसा यूज़ किया जो कम्प्लीटली खाली हुआ हो, या कि रेजर यूज़ किया जो कम्प्लीटली ख़त्म हुई हो, या कोई पेंसिल यूज़ किया जो कम्प्लीटली छोटी हुई हो, लास्ट टाइम कब किया था? कभी नहीं, हमें याद भी नहीं होगा, राइट? सो वो या तो वो खो जाएगा या हम खुद उसको फेंक देंगे कि यार अब छोटा हो गया, छोड़ दो। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। यू टेल मी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू यूज्ड अ नोटबुक और अ डायरी जब तक उसका लास्ट पेज फिल नहीं हो गया? That's really hard for me to recall. And it's kind of a reality check when you say it, it's kind of a reality check for me. Like अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो, and हम लोग we do this every day, and we don't even realize कि हम लोग जो utilization कर रहे हैं चीज़ों का, is it good? I mean, हम लोग क्या उसको अच्छी तरीके से we are using it, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? नो, आई डोंट थिंक सो. So that's how things are. uh, so when you come on ground you realize a lot of things. So it's a life lesson for you also, right? So all the people who think कि वो आके सिर्फ बच्चों के लिए कुछ करेंगे, उनके लिए build करेंगे, no. सबसे पहले as an individual you will learn a lot of things. You will understand how the reality is, how privileged you are. So when we say they are underprivileged, you'll actually know why they are called underprivileged, and why even whatever situation you are doesn't mean कि आपको अंबानी होना है, राइट? अगर आप एक बहुत बेसिक लेवल पे भी हो तब भी आप प्रिविलेज्ड हो, बिकॉज यू आर स्टिल बेटर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। Exactly, sir. And so, how do you think we can contribute to a child's holistic growth as an individual? So the very basic you can do is start sharing whatever, as we discussed, जो आपका बच जाता है is the least that you can do. Be it stationery, be it clothes wise, I would say that कई लोग होते हैं जो अपने पुराने unused clothes ले जाते हैं,
वो मत करिए। आपके कई नए कपड़े होते हैं, आपके कई स्कूल के शूज़ होते हैं, आपके बैग होंगे ना। हम सब कॉलेज में जाते हैं, हमारा होता है हर सीज़न में हमें एक नया बैग चाहिए, तो जो पुराना बैग है इवन इफ वो फटा नहीं है, हम फेंक देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ से निकाल के भी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, इफ यू कैन स्पेंड टाइम, नॉट जस्ट पहचान, नॉट जस्ट इन एक्टर्स, नॉट जस्ट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपका मेड के बच्चे हैं, आपके ड्राइवर के बच्चे हैं, आपके गार्ड के बच्चे हैं, आपके पास रैंडम कोई बच्चे आते हैं, spend some time with them, right? Just spending time with them would actually make you feel better. It can actually give a reason for you to be happy, right? So आप इतना करिए, and उसके बाद yes, there are hundreds of organizations on ground जिनके साथ if you want you can work on volunteer basis. आप regular basis भी कर सकते हो, but yes, the least you can do is as an individual also you can, you know, you don't actually need an organization to do something good. Even as an individual you can start doing it, and once you start spending time, obviously आपकी जब अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीजनिंग, आपकी नॉलेज किसी भी बच्चे के पास जाएगी, तो जो आपने सीखा है इट विल ओनली मल्टीप्लाई विद दैट चाइल्ड। तो दैट मोटिवेशन इज एनफ फॉर देम। जब उनको वो एक मोटिवेशन और वो एक रास्ता दिख जाएगा, बाकी चीज़ें वो खुद से सीखना शुरू कर देंगे। हमने कितने बच्चे देखे हैं जिन्होंने कम फ्रॉम अ वेरी बैकग्राउंड क्लास, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल दे परफॉर्म सो वेल। कोई आईएएस बन रहा है, कोई कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली लीडिंग द रेस। It's just that, you know, vision and confidence that we need to provide. Yes, sir. All we need to do is provide them with the fuel, and they will keep the torch ignited. Yes, yes, yes. So we recently, I don't know कहाँ पढ़ा था कि अंधेरा चाहे you know कितना भी गहरा ना हो, उसको हराने के लिए एक दिया काफी है. So Uh, that's I heard it somewhere, so I just thought of sharing it with you. But that's how the contribution is, right? So कितना भी ज़्यादा अंधेरा हो, even if you are the smallest of a light, it can actually defeat the darkness. yes, sir. So I guess we can actually do something. You know, जैसे कि आपने कहा कि college में we can have some drives when we collect all these things जो कि अच्छी तरीके से I'll say कि पूरी तरीके से utilize नहीं हो पाती हैं, Hmm. and are sort of a waste to some people, can be of waste to some people, but obviously are like of use to the children at the organization, at the NGO, right? So I guess आगे we can do some collaborative work or something like that. Sure, sure, sure. Always welcome. Yes, sir. So I am done with my questions. And lastly, we have the rapid fire round. Okay. So I am sure कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, and इसलिए this is actually the surprise element of the podcast. आपको इन questions के answer देने हैं in within 10 seconds, right? So Okay. yeah, all right. So the first question is, what's your go-to place? Pehchan. Ah, okay. That was really smart. All right, all right. Uh, Second question. What's your favorite cuisine? Indian, North Indian, All right. Favorite food? Rajma chawal. Okay. Okay. All right. What do you think is the weirdest thing about you? People think I am very arrogant. I'm very बहुत गुस्से वाला हूँ, बहुत डांटता हूँ. मैं एक्चुअली मैं डांटता हूँ, बट मैं गुस्से वाला बहुत ज़्यादा हूँ नहीं. So it's like a weird combination. Sometimes you have to be a person who you're not, just because you want people to behave like they should do, right? So that's the weirdest thing. All right. Okay. Okay. So, if you had to choose between money and fame, what would you choose? Money. Okay. All right. Which is the one movie you can watch at any point of time? हाँ, there are many. Uh, बहुत सारी हैं, मतलब मैं लिस्ट दूंगा तो उसमें ऐसे 300-400 मूवीज आ जाएंगी एसआर की जो आई कैन ऑलवेज वॉच.
Okay, so you are. अपार्ट फ्रॉम दैट अ नोन ऐसा की मूवी अगर कोई है सो दैट इज आई वुड से रंग दे बसंती, बिकॉज उसका एक बहुत अच्छा जो lesson है, that is actually what we all, not just me but a lot of, and maybe all of our volunteers are doing कि अगर अगर सिस्टम से प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो दो ही चीज़ें, या तो आप बैठ के बोल सकते हो अरे गलत है, या यू कैन जस्ट स्टार्ट एंड डू समथिंग फॉर इट. सो वंस यू स्टार्ट देयर वुड बी 100 पीपल हु विल जॉइन यू, बट वो इनिशिएट करने वाले बोलो, आई गेस दैट्स समथिंग दैट आई कैन वॉच अगेन एंड अगेन. Okay. So, what do you like doing on your weekends? Last 8 years से तो either I'm at some of the centers of Pehchan, or if I get time I travel. So that's majority is Pehchan में. All right. So I'm actually the most boring person in the whole group, because I don't party with them. I don't go out a lot with a lot of friends. बहुतों ने मुझे boycott कर रखा है because I don't spend time with them. My family also is कि I don't spend time with them because weekdays में office होता है, weekends में पहचान होता है. So actually weekends पे I spend even lesser time with my family than I spend on weekdays. So yeah. All right. Okay, so uh, I am done with the rapid fire Yeah, round. I know it wouldn't have been so interesting for rapid fire for you also. Well, प्रैक्टिकल जब सब जब आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे काम करते हो ना, तो आपके आंसर्स भी बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं रहते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं. सो आई गेस दैट्स द प्रॉब्लम विद पीपल लाइक मी. all right. So, I mean, okay. No, आप boring नहीं है. It's just maybe और I मैं mean, गुस्से वाला भी नहीं हूँ, मैं लगता हूँ थोड़ा खड़ूस, बट आई एम नॉट एट ऑल. I'll say कि that what I observed here is the quite the opposite. I'll say it's a stark contrast of the personalities. Just arrogant and So if we have met in person at Center, I'm not sure what kind of image I have in front of you, but yeah, that's it. So different locations, different personalities. uh, well, that's how things work, right? Okay, sir. Uh, I thank you on on our team's behalf, Team Kissa, and thank you for sharing your stories and inspiring words. It has been an absolute pleasure talking to you on our podcast, and it has been really very interesting. And that concludes for with our today's episode of Kissa. Thank you, listeners, for tuning in. Before signing out, I would like Akash sir, please share something with our viewers जो आप बताना चाहें हमारे listeners को. I'll share a story. It is kind of a depressing story. Um, I'm not sure how much time we have. So it's a story of a girl. So हमारे पास ये बच्ची जब से हमने सेंटर स्टार्ट किया था आईपी वाला, तब से आती थी. शी वॉज अ ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसकी जो एज थी और जो जिस क्लास में वो थी वो बार बार फेल हो रही थी. तो स्कूल वालों ने बोला कि हम क्लास तो नहीं बढ़ाएंगे, आपको इसी में बैठना पड़ेगा. उसने बैठना छोड़ दिया क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उसको लगता है कि मैं तो बड़ी हूँ छोटों में. जिससे उसने स्कूल छोड़ दिया, वो पढ़ती नहीं थी. हमारे साथ वो ऑलमोस्ट 4-5 साल वो कंटिन्यूस आई है, बट वो पढ़ती नहीं थी. वो सब करती थी, वो खेलती थी, कूदती थी, बातें करती है, मजाक चल रहा है, सब चल रहा है, बट वो पढ़ती नहीं थी. लॉकडाउन में उसकी शादी हो गई. शी वॉज अंडर एज, बट स्टिल शी वॉज फोर्सफुली मैरिड टू समवन वी डोंट नो. लॉकडाउन के बाद जब हमने फिर से सेंटर स्टार्ट किए, क्योंकि वो मतलब हमारे सेंटर के सामने रहती थी, हमने पूछा अच्छा वो बच्ची, तो सबने बताया उसकी तो शादी हो गई. ठीक है. आफ्टर अ वाइल, ऑलमोस्ट 6 months लेटर, हम मैं अपने मतलब सेंटर में जब हम एंटर कर रहे थे, तो उनके घर के बाहर से होके जाते, तो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी एक छोटी सी बच्ची लेके. अ, तो मैंने उससे पूछा कि ये किसकी बच्ची है. शी वाज लाइक ये मेरी बेटी है. मतलब ओके, हो सकता है इस एज में भी हो जाए. ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन. थोड़े टाइम बाद ही मतलब वहाँ पे हमें पता चलता है कि
क्योंकि उसकी बेटी हुई है, उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया, तो वो उसको वापस घर भेज दिया। अब उसको घर भेज दिया है, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई काम नहीं करता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको बेसिक राइटिंग भी नहीं आती है। जस्ट इमेजिन a girl of hardly 18, 19 or 20 years of age having her own daughter with zero financial support, zero support of any kind of literacy, उसको ये भी नहीं पता उसके राइट्स क्या हैं या उसको आगे करना क्या है। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन वी रियलाइज्ड कि शायद अगर हमने उसको जब बचपन में वो आती थी उसको थोड़ा सा फोर्स और किया होता, थोड़ा सा उसको पुश कर देते या कुछ करते, तो शायद एटलीस्ट वो इतना पढ़ जाती कि आज के टाइम पे वो कोई जॉब कर लेती, नौकरी ना करती, अपनी दुकान खोल लेती या कहीं पे भी जाके कुछ कर लेती, एटलीस्ट उसको बेसिक मैथ्स तो आता, वो पैसे गिनना तो जानती होती। जस्ट इमेजिन कि वो कितना डिप्रेसिंग है उस बच्चे के लिए जिसके पेरेंट्स एंड उनके भी पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। सो दैट्स व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, राइट? आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे किसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको शायद कभी पता भी नहीं चलता। सो द ओनली मैसेज टू पीपल इज कि whatever time you have, whatever resources you have, try to help someone. And education is something that will not take anything away from you, that will only make you a better person, and it will make the other person जिसको आप हेल्प कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करेगा। So but whenever you have time, please go out, reach out to people who need education, या किसी की आप एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हो, किसी को बेसिक आप जाके स्टेशनरी प्रोवाइड कर सकते हो, किसी को लाइफ में हर किसी को एटलीस्ट किसी एक इंसान की मदद करनी चाहिए पढ़ाई पढ़ने लिखने में। आप अगर उसकी हेल्प करोगे तो शायद आप किसी एक की ज़िंदगी बदलोगे, and ऐसे कर करके वी कैन एक्चुअली चेंज everybody's life and we can make a good life for everyone, and that's how we be a good society. So just go out of your comfort, spend some time, spend some resources, and yes, you'll be a superhero for someone, even though they might not thank you, even though you might not see them having the benefits of what you have given to them, but it will help someone for sure. That's beautiful, sir. That's beautifully put. And um, I am very sure that you have a lot of stories as such, and I hope that we get to interact more. And I'd love to hear more of your stories. So, yeah. Thank you so much for your time, sir. Sure. Thank you. Thank you. Thank you so much for having me here and sharing the story with other people. It's not just my story, but it's a story about the importance of education and why we should all be contributing to it. I think it's very clear for to all our viewers, all our listeners, who all of them who are currently watching this podcast. I am sure you have made this very clear now for every each and every one of us, even me. I feel truly enlightened. Thank you so much, sir. Thank you.